A very good question has been put by one of the aspirants. Sir, SSB की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? Even if I'm prepared to take leave and take coaching, etc., etc. Well, my take on this is कि आप पहले अपना गोल निर्धारित करो. आपका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है लाइफ में, what you want to do. If you want to get into the services as an officer, or you want to get into the civil services, you need to work on योर पर्सनैलिटी फर्स्ट. और इसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा. पहली बात कि आप अपने को पहचानो. गेट टू नो योर सेल्फ, गेट टू नो what are your core strength areas, get to know what are the areas that you need to improve upon in dealing with life on a day-to-day basis, right? You get to know what are the interests that you have. आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, कौन सी चीज़ें आपको पसंद हैं, कौन सी चीज़ें आप ज़्यादा करना चाहते हो. डू दिस इंटरेस्ट अलाइन विद द काइंड ऑफ लाइफ दैट यू आर लीडिंग और यू वांटिंग टू लीड. सो उसको आप पहचानने की कोशिश करो. मे बी यू वुड फाइंड दैट फॉर समथिंग दैट यू आर एस्पायरिंग फॉर, यू नीड टू ऑल्सो ड्वेल इन टू एरियाज दैट वुड बी हेल्पफुल, राइट. आप आर्म फोर्सेस में जाना चाह रहे हो तो यू ऑल्सो नीड टू बी एक्टिव एज फार एज द आउटडोर एक्टिविटीज आर कंसर्न. इट कुड बी गेम्स, इट कुड बी स्पोर्ट्स, इट कुड बी some extracurricular activity, adventure activities and likewise, right? So इस तरह से अपने जो इंटरेस्ट हैं, आपकी जो हॉबीज़ हैं, उनको आप देखो, राइट. उनको चेंज करो, अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ नई हॉबीज़ आप डालो, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इज़ ऑल्सो योर अवेयरनेस लेवल्स. आपको इस किसी चीज़ के बारे में जानने की उत्सुकता है कि नहीं. आर यू क्यूरियस इनफ, राइट, इन द एनवायरनमेंट दैट यू आर लिविंग, इन द थिंग्स दैट यू आर डूइंग. आर यू क्यूरियस टू लर्न, राइट? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी अगर you are willing to learn more, you're willing to have a deeper knowledge of things that you are interested in, that helps a lot, right? इसी तरह से आपके environment में जो हो रहा है उसकी आप खबर रखते हो कि नहीं, खबर रखना चाहते हो कि नहीं, राइट. कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि यस यू आर बिजी विद एग्जाम्स एंड थिंग्स लाइक दैट, तो आप उतना समय नहीं निकाल पाते हो. बट स्टिल जब आपको समय मिलता है, यू आर keen to learn more about it. It helps in all competitions, right? Then we come to a very, very important aspect about the communication. Communication आपको पता लग सकता है कि आप वाकई में अपने को एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. When I'm talking about communication, I'm basically saying that you should be able to express what you want to convey. और इम्प्रेस करने वाली बात नहीं है, इट इज़ ओनली अबाउट एक्सप्रेशन. अगर आप अपने जो नॉलेज है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज़ एज गुड एज नॉट हैविंग दैट नॉलेज. सो इट इज़ सिंपल एज दैट. ऑल्सो जैसे मैंने बताया आपको कि एक आपके एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका फ़ायदा उठाना सीखो, उनको उनमें पार्टिसिपेट करना सीखो. सो जब हम देखते हैं SSB में कि what kind of environment you had, what kind of opportunities you had, whether it is for the games, for sports, for various other activities, have you had an inclination, did you actually take part in that? So अगर आपने ये नहीं किया है, start doing it now. It's never too late, right? Never too late to start new things. तो आप इस तरह की चीज़ों को ये बदलाव लेके आओ अपनी पर्सनालिटी में, अपने डे टू डे बिहेवियर में. एंड फॉर ऑल ऑफ दीज दैट आई हैव मेंशन्ड, यू डोंट नीड टू टेक अ ब्रेक, यू डोंट नीड टू टेक अ कोचिंग. इसके लिए आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, कोई छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है. जो आप काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, while doing that you can do all these things. But yes, this would be the foundation for doing your best, giving your best during the SSB interview, which is a very comprehensive assessment of your personality, right? So what would perhaps help is, if you take some guidance, you do some nuances जो हैं टेस्ट वगैरह के, वो आप किसी कोचिंग में भी जाके आप सीख सकते हो. वो फाइन ट्यूनिंग होगी. लेकिन इफ़ यू थिंक इट इज़ जस्ट दैट, तो तब शायद दैट विल नॉट बी गुड इनफ. सो माई सजेशन वुड बी स्टार्ट फ्रॉम टुडे itself and work on those points. Like I said, I'll repeat, what are your goals? Be very clear about your goals, about your
इंटरेस्ट प्रेफरेंसेस आपके क्या हैं, राइट? किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट रहता है, और आर दे अलाइंड विद द काइंड ऑफ गोल दैट यू आर or the profession that you are wanting to join. Work on your awareness levels, work on your communication, and also whatever opportunities you have before you, try and take part, right? Try and make use of those opportunities. Be an active person, actively doing these things rather than passively learning and reading about this, right? So this will be my advice to any aspirant who's wanting to prepare, whether it is for the defense services or for any other career, including civil services. So I hope it helps you, and I request you to like, share. Many of your friends might get helped. Jai Hind.